हेलो दोस्तों। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम मिक्स्ड बैग के साथ तैयारी करेंगे। टुडे वी विल लर्न सम मिक्स्ड न्यूमोनिक्स फ्रॉम दिस एंड दैट टॉपिक्स. So before starting, I would like to ask you to please like, share and subscribe and hit the bell icon for the all notification, so that you don't miss any video. And please hit the bell icon, and please mention in the comment box what all topics you want to read. We can discuss the theory and MCQs also. So I would like to welcome your suggestions. So now we will start, and please listen to it and watch it till end so that you don't miss any important thing. This is very important from my own notes that I used to prepare with my PG preparation. So today we will discuss about apoptosis, calcium detected by, bone mineralization base detected by, and Felty's syndrome mnemonic, and what is rheumatoid arthritis in short, and absorption sites. So 6 things we gonna learn today. First of all, apoptosis. The mnemonic is Mona. Mona, you can take a name of a girl which is defining the apoptosis. So it is M for morphogenesis, O for organogenesis, N for neovascularization, especially removal of sprouting capillaries, and A for autoimmunity. In this autoimmunity, we will see protection against autoimmunity by killing self antigens. So जब भी हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास निमोनिक मोना है, एंड वी हैव 4 थिंग्स. दिस इज मॉर्फोजेनेसिस, ओ फॉर न्यू ऑर्गन फॉर्मेशन, एंड न्यूवास्कुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होता है तो ऐसे स्प्राउटिंग्स होती है कैपिलरीज की साइड से, इनको डिजॉल्व करना एपोप्टोसिस का काम है. ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू यू. देन कम्स द ऑटो इम्यूनिटी, तो रिमूविंग द सेल्फ एंटीजन. Okay, now we move on to our second mnemonic, which is calcium is best detected by cave. So you can imagine some cave is made up of calcium. Okay, some Himalayan cave is made up of calcium. This is cave and it is of calcium. So C for calcerin, A for alzarin red, and V for voncosa. So calcium is detected by cave, calcium, alzarin red, and voncosa. Then we will see one-liner question. Bone mineralization best detected by tetracycline labeling index. So you can remember this tetracycline labeling index. Okay, then we come to our fourth thing, which is the Felty's syndrome. So Felty's syndrome is mixed of few things. First is rheumatoid C. The mnemonic is Faltu Rasna Lime. Rasna means in India there is some flavored juice which we call rasna. Lime is lemon, and faltu means uselessly. So faltu rasna lime, or you can learn it faltu mein piya rasna. Faltu means, this is faltu means Felty's. Faltu is a Hindi word for our other national for foreign nationals, students and doctors. Faltu is Felty, the similar word. में पिया रसना की स्पेलिंग RASNA, लाइम. RA मीन्स रूमेटाइड आर्थराइटिस. सो फेल्टी सिंड्रोम, व्हाट ऑल वी सी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. S फॉर स्प्लीनोमेगेली. N फॉर न्यूट्रोपीनिया, मीन्स पीनिया मीन्स डिक्रीज. whenever penia comes means decrease in number. So decrease in neutrophils, with neutrophils decrease होते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया. देन कम्स A फॉर एनीमिया, एंड लाइम फॉर इंक्रीज लिम्फोमा रिस्क. अगेन फालतू में पिया रसना विथ लाइम. RA फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, S फॉर स्प्लीनोमेगेली, N फॉर न्यूट्रोपीनिया, एंड A फॉर anemia, lime for lymphoma risk. I am repeating this so that you remember this here itself. You don't need to revise again. Then RA is symmetrical, and RA को you can remember is SPS. Symmetrical means both the side, right hand left hand equally involved, or right leg left leg equally involved. Then polyarthritis means many joints, more than one joints is polyarthritis. And then mainly of small joints, like hands के small joints like this. Okay, then comes the absorption sites. So absorption sites, the mnemonic for absorption sites we have IM
फेवरेट इन ड्यूट्स जेल, मतलब कि सपोज करो किसी को जेल हुई तो वो बंदा अपने ड्यूट्स फ्रेंड से बोल रहा है आई एम फेवरेट इन ड्यूट्स जेल, उसके ड्यूट्स फ्रेंड्स भी जेल में हैं. जेल मीन कैसल. ओके, सो आई फॉर आयरन, एंड आयरन एब्जॉर्ब्स इन मेनली डिओडिनम. सी आई आयरन, डी से ड्यूट्स, I am favorite in Dude's gel. Dude's means duodenum. So iron absorbs in duodenum. Then M is nothing here. Favorite की spelling हमने लिखी है FAVOURIT. So FA for favorite we will take FA, and FA means this is folic acid, folate, which is absorbing jejunum. How? Favorite FA यहाँ से लिया हमने and J यहाँ से लिया. So J for FA for folic acid and J for jejunum. Then we will take vitamin B12. This V is vitamin B12, so it is here vitamin B12. This V is here vitamin B12, and this T for terminal, and this IL, this IL is this IL, as you can see I and L. This IL is terminal ileum. I hope this is clear to you. Again, I can revise it for you in 1 minute. Apoptosis, mona, morphinogenesis, organogenesis, neovascularization, removal of sprouting capillaries in autoimmunity, protection against autoimmunity by killing self-antigen. Then calcium is detected by CAV, calcin, Algerin red and Voncosa. Bone mineralization is best detected by tetracycline labeling index. Then Felty syndrome is Faltu में PR Rasna with Lyme. Faltu is Felty, RA is rheumatoid arthritis, S for splenomegaly, N for neutropenia, A for anemia, Lyme for increased lymphoma risk. Then RA is symmetrical, bilaterally symmetrical. Polyarthritis, more than one joints, mainly of small joints. Okay, then absorption sites. आई एम फेवरेट इन ड्यूट्स जेल, इसको आपको ऐसे पढ़ना है, आई एम फेवरेट इन ड्यूट्स जेल. आई इज आयरन, डी यू इज ड्यूडेनम. दिस इज एफ ए, फेवरेट का एफ ए मीन्स फॉलिक एसिड, एंड जेल हियर, यहाँ से एक लाइन उठाएंगे हम न्यूट्रिएंट्स की और यहाँ से साइड्स की. सो एफ ए इज फॉलिक एसिड एंड वी इज विटामिन B12. देन जे इज जेजुनम एंड आई एल इज इलियम, एंड यहाँ से टी उठाए तो टर्मिनल इलियम. सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. So please like, share and subscribe. Thank you for watching, and tell me how you are finding this. Hope you are preparing well. If you are low in confidence or motivation, please tell me. I will make more motivation videos. Thank you for watching.